Okay. So it is a pseudo code for adding the two number. दुईटा नंबर को आम ये आड करवा एटा होची सेटा होची pseudo code रहइबो बुझियो हां था. So numeric n norm1 norm2 and n sum we are defining three variable ako ame तीनटा variable कहवा. ओके जेहेतु आम यहाँ कौन नौचे ना न्यूमेरिक वैल्यू नौचे इंटीजर वैल्यू नौचे से न्यूमेरिक डाटा टाइप डिफाइन कराला न्यूमेरिक देन तीनटा वेरिएबल है norm1 norm2 एंड n sum आम दीटा नंबर ऐड करबा गोटे करे रिजल्ट शो करिया तो दीटा नंबर नबा पई एठी नियाला नंबर 1 नंबर 2 एंड n sum फर्स्ट नंबर पे नंबर 1 सेकंड नंबर पे नंबर 2 थर्ड पे सम रहला एटा शो करियो डिस्प्ले एंटर ए नंबर तो देखिबो डिस्प्ले एंटर ए नंबर देन एक्सेप्ट नंबर डिस्प्ले एंटर ए सेकंड नंबर एक्सेप्ट नंबर देन सम इक्वल्स टू norm1 plus norm2 दीटा नंबर से ऐड कला एठी मते रिजल्ट डिस्प्ले करियो. ओके नेक्स्ट पार्ट है तो variable is what? Variable refers to a memory location that can store only one value at a time. So at a time we can store only one value throughout the program. A constant refers to the memory location that hold a value which remain fixed throughout the program execution. Variable माने आज मैं बसले गोटे चेयर रे तो काली मे भी आम गोटे चेयर बसवा गोटे बस रे जिते आम आसुचे आमको बस रो सीट टा सब आम फिक्स रोनी तो सब कौन हम ना बस सीट टा चेंज होची किंतु बस भितर ड्राइवर सीट टा केबे चेंज होनी. Okay, so constant refers to a memory location where your value is fixed throughout the program execution. Okay, so throughout the program execution रे हमारा value टा एठी fix रहिबो आउ variable रो value टा सब changes रहिबो. Okay, so consider an example of a program that accepted two number and display their sum. The program needs to three variable दुईटा नंबर आम ऐड करवा रिजल्ट शो करवा गोटे मिनट ओके सो ये आम कौन करवा ना दीटा जो प्रोग्राम अच्छी पहला गोटे
Okay. So consider example that accept two number and display their sum. So this program needs to the three variable. Okay, so two to store the numbers entered by the user, and one to store the two number. So for a given example, we are defining a three variable. गोटे हूँ फास्ट नंबर, सेकेंड नंबर आ गोटे है सम, माने आमे मल्टीप्लिकेशन पे ये आमे तीनटा नंबर यूज करले. बुझिला ऋतु? ऋतु मना? आज्ञा सर. Okay, so here defining fast number, second number and sum. So आमे तला fast number define करछे, एटा होची variable name रहउची, एटा होची तार value, माने automatic program रे ये गोटे internal memory allocate करछी. एटी सेमती सेकेंड नंबर रहिला, सेकेंड नंबर रहिला 4562. एटी रहिला सम पाई गोटे आगे मेमोरी एलोकेशन, एटा होची मेमोरी एड्रेस सब डिफाइन करा होची. So let us perform the following exercise. You have to write a pseudocode that accept two number and display their sum and product. Okay, हमें sum और product इटा define करिवा. Considering the preceding requirement, identify the variable and constant required for writing a pseudocode. एटी को variable को constant define होगा. How many variable and how many constant is required? Constant define हो? हाँ? सर शुभुनी किछि. केमती सुबिलानी? एबे सुबिला? सर शुभिला. तो एटा हमरा गोटे सुडो कोड डिफाइन कले, जोटा कि आमे लिखिबा द accept the product name and quantity as input. Product name और quantity आमे input नबा, and एटा मते total price टा मते एटी शो करियो. That the unit price already store, unit price टा already store हेइ जाछि. ना product name रखिबा, quantity रखिबा as input, and display the total price, price टा मते एटी शो करियो. Our unit price टा already मोर store अछि. Okay, so identify the variable and constant required for writing the program. हमें को variable और constant कौन define करियो? आदरे variable कोडा रहेगा, constant कोडा रहेगा.
को ऋतु Yes, sir. टोटल प्राइस टा केमती टोटलिंग मु जदि क्वांटिटी अधिक आनिबी तू 5टा आनलो मु 6टा आनलो टोटल प्राइस टा चेंज होबनी टोटल प्राइस टा हला वेरिएबल तापरे प्रोडक्ट नेम टा भी हबो वेरिएबल क्वांटिटी हबो वेरिएबल आ कोन रहला यूनिट प्राइस एमआरपी टा तू जो जिनस आनी एमआरपी मु जो आनी ता चेंज हो कोन हां केमती एमआरपी चेंज 5 टଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବୁ 5 ଟା ଖାଇଥିବ ତୋ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା କୋଉ ଏମଆରପି କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦେଖି डिस्काउंट दे पारिबे ना तू पाख लोक तो 2 टଙ୍କା कम रहला ताको କିନ୍ତୁ एमआरपी कोन चेंज हो तो सेटा यूनिट प्राइस सब सेम रहबो बुझियो कि सेटा रहला प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस इज कॉल्ड द वेरिएबल ओके आउ कांस्टेंट यूनिट प्राइस ता हमर कांस्टेंट रहला data value can be broadly classified in the following type आमे जो value गुडा को स्टोर करूचे हला सेटा होची दी प्रकार गोटा होची न्यूमेरिक आ गोटा होची कैरेक्टर variable should be declared along with the data type तो जेमते आमे बाजार को जिबा तो ये परिबा आने को चाहूचे ताले परिबा गोटे बैग दरकार से बैग भितर आमे पेट्रोल आनी परिबानी पेट्रोल ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି डाटा यूजर ଠାରୁ नबा से डाटाटा होची ଦି ପ୍ରକାର आइदर सेटा न्यूमेरिक हेतिबो आ नहले कैरेक्टर हेतिबो ओके the variable should be declared along with the data type specify the type of data to be stored in the variable को टाइप रा वैल्यू हमें स्टोर करिवा वेरिएबल से डिफाइन each data type allocate the fixed amount of memory space सब डाटा टाइप जोटा न्यूमेरिक हो कैरेक्टर हो से गोटे फिक्स नंबर ऑफ साइज डिफाइन करिसंती प्रोग्राम में ओके तापर कोन हुए ना ए जो साइज टा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टा डिफरेंट रहिबो सब प्रकार सी पई अलगा रहिबो जावा पई अलगा रहिबो so for the different programming language to the programming language it is different it is essential to declare a variable so that memory is allocated for a value before it is used in a program so while naming a variable the following rule must be followed okay आमे तला वेरिएबल नाटा दवा आमे सब रूल फॉलो करिवा इट कंसिस्ट ऑफ ए लेटर द वेरिएबल टा सबले लेटर टा रखिबो upper case as well as lower case it must be begin with a letter or underscore जो वेरिएबल टा में डिफाइन करिवा फास्ट लेटर टा कहां हबो ना आइदर गोटे लेटर रो स्टार्ट हबो नले अंडरस्कोर रो स्टार्ट हबो तो इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड स्पेस एंड सिंबल आ भितर कोनसी स्पेस रहिबो नाही वेरिएबल आमे जतबे डिफाइन करिवा जेंति कि सपोज मते स्टूडेंट नेम लिखिबार अछि so when you define a student name suppose student space name okay so here
we can define student underscore name. Student underscore name is used for defining a variable. কিন্তু ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି student space name. Student space name, if you define it, is showing you the wrong thing. Okay. ଆଉ ଭେରିଏବଲଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ ହେବ ସେଇଟା ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବାନି 9 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍, ଏଇଟା ଡିଫାଇନ୍ କରି ହେବନି। ତ ସବୁବେଳେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ସି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ଆମେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡାଟା ଟାଇପ୍। ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଲା। In addition to the variable naming rule, you may consider the following variable naming convention. The first letter of the variable may indicate the data type. The first letter means when you define here student name, here I define C student name. C student name is defined as a data type. এটা আমার data type বলে define করা হবে। The first letter of the variable may indicate the data type is used. Variable name should clearly describe its purpose. In the case the variable name consists of the multiple word, ରହିବ, the first letter of each word could be capitalized. The first letter ଟା ସବୁବେଳେ capitalize ହେଇକି ରହିବ। Okay, suppose ମୁଁ ଏଠି define କରିବି data type then variable name, এটা define କରାହେଲା। All the variable need to be ଏଇଟା ତ syntax ରହିଲା। ତ ସ୍ମଲ୍ ଟେ କିଛି ଆମେ define କରିବା କେମିତି, character define କରିବା, numeric define କରିବା, ବୁଝୁଛୁ? All the variable need to be assigned a value before their use. This is to ensure that the memory space allocated to the variable is initialized with a valid value. In the two way, माने आमे variable टा जेतेबेले define करिवा आमे ताते किछि value assign करिवा। Okay, value assign करिवा, then कौन पे value assign नवा ना, this is ensure that memory space allocated to the variable initialized with a valid value. जदि मो character define करिछि ताले character store करिवो, जदि मो integer बा numeric define करिछि numeric value store करिवो। दीटा वे रे आमे variable रे value store करि पारे, गोटा होछि direct assignment आ गोटा होछि accept statement। डायरेक्ट असाइनमेंट कौन ना, n height equals to 172, age equals to 35, counter equals to age plus 10। ओके, मु एज रे 10 टा ऐड कली, आठी कोड हला xyz। ओके, माने एटा होची डायरेक्टली माने मु वेरिएबल टा डिफाइन कली, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल मु वैल्यू टा को इनिशियलाइजेशन कर देली। तो एटा को कहा जीवा डायरेक्ट असाइनमेंट। इनडायरेक्ट एक्सेप्ट स्टेटमेंट मींस it is what asking the user, आमे यूजर ठार वैल्यू नवा, जेमति आमे यूजर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिवा एंटर ए वैल्यू, तो यूजर गोटे वैल्यू दबो, से वैल्यू टा को आमे स्टोर करियो। जेमति आमे फेसबुक रे लॉगिन जेतेबेले करूछे से मागुछे हमको एंटर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, सो दैट लॉगिन आईडी पासवर्ड जोटा आमे एंटर करूछे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्सेप्ट स्टेटमेंट, मींस इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट एक्सेप्ट स्टेटमेंट। मो यूजर ठार वैल्यू आने की वैल्यू टा स्टोर करूछु। Now which of the following variable doesn't comply with an variable naming convention? कोटा variable naming convention wise हेनी आ भितरे, कोटा incorrect। तो कोटा incorrect हो, ये चारटा भितरे कोटा incorrect।
Sir, n unit price. Unit price. So let us perform the following exercise. Which of the following variable is declared as per as the naming convention? ଭିତରେ କୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ କି ଇନକରେକ୍ଟ? First sir correct. Space. ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କଣ ହବ ଆଉଥରେ କହିଲ? Sir first correct ଅଛି space. ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। n average ଅଛି ଯେ ଆ ଭିତରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା इनकरेक्ट अछि काई ना परसेंटेज लागिवो। थर्डटा Sir correct अछि। थर्डटा इनकरेक्ट स्पेस अछि देखो सी फास्ट स्पेस नेम आज्ञा आज्ञा। तापरटा एड्रेसटा एड्रेसटा भी भूल अछि। सी नेमटा ठीक अछि। तापरटा यूनिट प्राइसटा ठीक हो भीतर सीमित तापर भी ठीक हो। हाँ चलिए। So write a pseudocode to accept the two number and multiply the number and then display their product. दीटा नंबर आमे एक्सेप्ट करिवा ताको मल्टीप्लाई करिवा तापर आमे रिजल्ट शो करिवा। तो न्यूमेरिक n norm1 n norm2 product then accept number 1 accept number 2 हबो खाली norm1 norm2 लिखले भी हबो किंतु as the pseudocode कहूची जे तार आमे न्यूमेरिक वैल्यू नबा से जगह जदि आमे n टा डिफाइन करबा देन इट इज गुड माने भलो टिके रहिबो। प्लीज accept number 1 accept number 2 product equals to number 1 into number 2 then display the product norm1 then n norm2 okay. Then next is write a pseudocode that accepts the temperature in Celsius and convert it into the Fahrenheit. Write a pseudocode that accepts in temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit. तो रे नंबर टाको फारेनहाइट करिया गले कोन करिया गबो 9/5 into temperature in Celsius plus 32. The numeric Celsius then Fahrenheit then accept Celsius मैं Celsius टाको accept करूँ तो Fahrenheit equals to 9/5 into Celsius plus 32. Okay, तो 9/5 वो डिवाइड कले Celsius रे मल्टीप्लाई कले प्लस 32 ऐड कले then the temperature in Fahrenheit तब पूरा Fahrenheit रे टेम्परेचर देखियो बुझे ना तो तू बुझ पाइलो इटा आज्ञा सर। all computer
language provide the tools for some predefined operation. These tools are known as operators. Operators are categorized in the following way. One is arithmetic operator, relational operator, logical operator. So three type of operator we are using: arithmetic operator, relational operator, then another is logical operator. In arithmetical operator, we are using multiplication, number equal to number into 2, division, number equals to number by 2, plus number equals to number plus 2, minus equals to number minus 2. Okay, so these are the arithmetical operator we are using. Okay, number equals to number into 2, number equals to number by 2, number equals to number plus 2, number equals to number minus 2. Modulo, it is used divide the two number and return the remainder. Okay, so you divide one number and get the remainder part. That is called as a modulo. Then we're using multiplication first, then division, modulo, plus and minus. The precedence is from high to low. So first आमे जेतबे ऑपरेटर मल्टीपल ऑपरेटर यूज करिवा फास्ट प्रायोरिटी जीव मल्टीप्लिकेशन को तापर आसीबा हमर डिवीजन को तापर आसीबा मॉड्यूलो को तापर प्लस तापर माइनस. Okay, so these are the precedents of operator: plus, multiplication, division, modulo, plus and minus. अच्छा, modulo माने बुझियला तो ये तो बुझि पाइला modulo माने कौन? आगे गोटे नंबर को आमे डिवाइड करिवा, डिवाइड कला परे भाग शेष जा रहिबो सेटा होची आमे मॉड्यूलो रे शो करियो. Then arithmetic operator we are using. One is multiplication, division, modulo, plus and minus. এটা হচ্ছে হাই রু আমি লো কো দিব. Then next is relational operator. Relational operator are used to compare the two variable and constant. One is equals to, greater than, less than, not equals to, greater than equals to. Equals to means, suppose যদি ମୁଁ ଲେଖିବି a is equals to 5, that means I have assigned the value 5 in a. If I write a is equals to 5, that means it will check whether the value of a is equals to 5 or not. ବୁଝିଲା? ମାନେ a ର value 5 ସହିତ equal କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି. a is equals to 5. ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି a is equals to 5, that means a ରେ ମୁଁ 5 ଟାକୁ ଇନିशिଆଲାଇଜେशन କଲି. a ର value ହେଉଛି 5. কোটা কইছো এর ভ্যালু 5 ফার্স্টটা a is equals to 5 মানে a ର ভ্যালু 5 ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ କି ନାହିଁ କଣ୍ଡିସନ. ତାପରେ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ a ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ b. ଓକେ, ତ ଏଠି ନିଆ ହେଲା କ'ଣ num1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ନିଆ ହେଲା 25, num2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ନିଆ ହେଲା 40. ତ num1 is greater than 40 ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଲା ତାହେଲେ num1 is greater than num2. True or false? False ହେଲା.
norm 1 is less than norm 2. True. Norm 1 is not equal to norm 2. True. Norm 1 is greater than equals to norm 2. Greater than की नुहे कि equal to नुहे. Then we go for a logical operator. Logical operator are used to combine the expression containing the relation. हमें use करिवा and operator, or operator and not operator. And operator means if both the condition are true, it is return you true value. Okay. Or means माने मैं देखिवा and operator है. Logical operator. It will check if true, it return you true. True, false. Logical operator in the case of and true, false is true. Sorry, false. False is false and operator. Or operator true is true. True, false is true. False is true. Sorry, false. Not operator, it is working on the true. If it is true, then it is return you false. If it is false, then it is return you true. यदि true है ताले false देखिए यदि false है ताले true देखिए. Is the work of three logical operators. Think logical operators. हाँ. True है true. मैं and कहूँ जे जब दीटा condition टा true है ताले से true return करें. यदि जे कोनो छोटे condition false है false है. और कहूँ जे यदि true है true हो. गोटे जदि कौन सी ट्रू है तारे ट्रू रही. दीटा रही गोटे नॉट माने कौन नेगेशन. गोटे ट्रू है फॉल्स फॉल्स है ट्रू. नॉट गोटे जाए धीरे धीरे. It is a precedence of high to low, not and at or operator. हाँ. फोल्डर बने से कैसे फोल्डर को कॉट पेस्ट करके कर लो. हे गला तो ठीक है. थाओ थाओ खोला था. बंद केमती करिवो एटा बंद करिवो. एकदम ओके. ठीक पूरी कर पूरी विरी कटक रे कर कितना है मत कहलु.
हम्म, 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 मते कहूँ मो आगे अच्छी बड़ आम कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट केते टଙ୍କା केते टଙ୍କା पूरा 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲା ଆଉ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତ ମନା କରି ପଳେଇ ହଁ ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ସେଣ୍ଟ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପଢ଼ଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ମିଶିକି ଦେଇପାରିବ 12ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 3 ଦିନ ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଫେଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଗଲାବେଳକୁ ବାହାରେ ସେଠି କରିବ ପିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ପାଗଳା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा এটা অনলাইনে ଯୋଉଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଗଲା ଅନଲାଇନରେ ବି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ବି ଅଛି ଏଠିକି ନା ହତାଶ କରିବେ ଇଏରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିକି ଚେକିଂ କରି କରିପାରିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେତେ 500 ଟଙ୍କା ବୁଝିକି କହିବ ଆରାମସେ ପଢ଼େଇବେ କହିବ କାଟିକି କରିଦେବ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼େଇବ ମାର୍କସିଟ୍ ସତରେ ଗଭର୍ନମେंट ऑफ इंडिया हाँ ପିଜିଡ଼ି କରିଦେବ ନିଜେ 500 ପାଉନି ତାପରେ ସିଟା ହେଲେ 350 350 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 350 କୋରିଅର ନେଇଯିବ 400 ଭିତରେ 550 ଦବୁ କରିଦେବି ଟୋଟାଲ୍ 550 ଦବୁ କମେଇ ଦେବୁ 350 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହିସାବଟା 350 ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋରିଅରରେ ମଗେଇବାକୁ ଲାଗିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ କୋରିଅର ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ଦେବେ ହଁ ତୁ କହିବୁ ନିଜ ହଉନି ପଚାରିବୁ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କାଟିକି କରିଦେବି ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ିବି ତୁ ତ ପଢ଼ୁଛୁ ଜାଣିଥିବୁ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେସିନ୍ ବୁଝୁଥିଲି ହୁଁ କୋଉଠି
ओके देखो ମାନେ ତମେ इंजीनियरिंग पिला पीजीडीसी जदि करियो तार काई करियो देखो while writing a pseudo code you check that हमें चेक करिवा जे हमर प्रोग्राम टा करेक्ट अछि कि नै माने कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम हमें जदि डिफाइन करिवा ताले हमें यूज करिवा if construct और switch case while writing a pseudo code you check for the condition by using decision making statement हमें यूज करिवा if construct another होची switch case दीटा कंस्ट्रक्ट हमें यूज करिवा if else रे करि परिवा नले हमें switch case रे भी करि परिवा एटा होची दीटा कंस्ट्रक्ट if construct specify the conditional expression that needs to be evaluated simple if construct if else construct nested if else construct so these are the different part of if construct is used माने condition check को evaluate करिया पई हमें तीन प्रकार कंस्ट्रक्ट यूज करिवा गोटे होची सिंपल इफ गोटे होची इफ एल्स आ गोटे होची नेस्टेड इफ एल्स माने गोटे इफ एल्स भीतर आ गोटे इफ एल्स हैला सिंपल इफ कंस्ट्रक्ट एंती हबो ना इफ कंडीशन माने इफ एटी मो कंडीशन जली जदि मो कंडीशन टा एटा इवैल्यूएट ट्रू हैला बाबा मो कंडीशन टा एटी करेक्ट हैला ताले ता स्टेटमेंट टा एटी एग्जीक्यूट हबो जदि मोर कंडीशन टा फॉल्स हबो एटी कोनोसी स्टेटमेंट टा एग्जीक्यूट हबो नै if else if condition जदि मो कंडीशन टा ट्रू हैला ताले स्टेटमेंट एटी एग्जीक्यूट हैला और एल्स एटी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो फॉल्स এটা হচ্ছে pseudo code that accept a number whether the number is even or odd गोटे नंबर टा even की odd हमें केन देखिबा begin सर शुभुनी ठीक से एटा होची हमर जो नंबर टा हमें यूज करूचे एबे सुबिला ठीक ठाक एबे सुबिला त ऋतु शुभुनी सर शुभुनी आज्ञा शुभुनी सर एटा हला हमें यूज करले begin numeric n num माने हमें एटा चेक करिवा गोटे नंबर इवन की ऑड हमें एटा गोटे वेरिएबल नेले जोटे कि हमें वैल्यू स्टोर करिवा तापर लिखिबा डिस्प्ले एंटर ए नंबर माने हमें यूजर को कहले जे गोटे नंबर दवा बोले तो यूजर एठी गोटे नंबर देला तापर हमें गोटे नंबर इवन की ऑड केमती जानिबा जदि से नंबर टा 2 द्वारा डिविजिबल हबो आ रिमाइंडर टा 0 हबो देखेबा एटा इवन तो मु नंबर टा पास कले डिविजिबल कले 2 जदि मोर रिमाइंडर 0 होला देखेबा डिस्प्ले नंबर इज इवन ओके तापरे जदि मोर नंबर टा डिविजिबल बाय 2 न होला सेटा मते ऑड देखेबो तो मोटे नंबर नेली नंबर टा जदि डिविजिबल बाय 2 होची डिस्प्ले नंबर इज इवन और एल्स नंबर इज ऑड बुझियोची बुझी पाइलो आज्ञा सर एबे देखो मुनेली बिगिन तापर देखो न्यूमेरिक n नॉर्म n नॉर्म मु डिफाइन करली तो डिस्प्ले एंटर ए नंबर मु 4 पास कली एक्सेप्ट कली 4 रे 2 डिविजिबल कली रिमाइंडर इज 0 एस सेटा शो कला नंबर इज इवन तापरे पुनी नेक्स्ट मुटी पास कली आ गोटे वैल्यू नहीं आला begin numeric a norm enter a number
तर मु आउ गोटे नंबर नौ एठी गोटे वैल्यू नेली 9 तो 9 मॉडुलो 2 इज इक्वल्स टू 0 तो 9 टा 2 द्वारा डिविजिबल नुह तेणु यहाँ देखा कौन मोर एल्स पार्टा ये एक्जिक्यूट हम that is showing you the else part display the number is odd बुझेला ये तो बुझेला आज्ञा सर ठीक है तो এটা नेक्स्ट क्लास रे पुणी आम इफ एल्स कंडीशन टा नेस्टेड इफ एल्स पढ़िबा है ठीक अछि चलो